डू यू नो दैट द कंपनीज आर जस्ट लाइक अस? हमारी तरह कभी कभी उनको भी फंड्स बोरो करने की जरूरत पड़ती है, बट अनलाइक अस दे डोंट डिपेंड ऑन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, but they issue something called debentures. Hello everyone and welcome back to the commerce element. In the entire playlist of debentures, we will be covering everything right from the theory to all the four varieties of practical sums. So without wasting time, let's start with the meaning of debenture. So what is debenture? Debenture is nothing but it is a return acknowledgement of the debt taken by the company. कंपनी अपने कॉमन सील के अंडर में रिटर्न में एक्नॉलेज करती है दैट यस आई हैव कलेक्टेड डेट फ्रॉम द मार्केट, आई हैव कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम द मार्केट, या आई हैव बोरोड फंड्स फ्रॉम द मार्केट. Now, depending upon the market situation, depending upon the investor's mentality, depending upon the prevailing interest rate, and so many such factors, companies issue different types or different categories of debentures. तो एज सच अगर हम डिबेंचर्स को कैटेगराइज करें, देन डिबेंचर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 1, 2, 3, 4 and 5 categories. Let's see all of them one by one. The very first category is on the basis of security. Now, on the basis of security, the debentures can be either secured debentures or they can be unsecured debentures. Now, if the company has issued secured debentures, then debenture issue करते टाइम कंपनी ने अपने एसेट्स में से कोई ना कोई एसेट मोर्गेज रखा होगा, सो दैट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट अगर कंपनी पैसा वापस ना दे सके तो वो मोर्गेज एसेट सेल करके द कंपनी कैन रीपे द फंड्स. सो दोज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट में कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज अगेंस्ट एसेट मोर्गेज रखा हो. Unsecured debentures are those debentures जिसको इश्यू करते टाइम कंपनी हैज नॉट क्रिएटेड एनी चार्ज ऑन एसेट, दैट इज कोई एसेट मोर्गेज नहीं रखा. सो सिक्योरिटी के बेसिस पे यू कैन हैव सिक्योर्ड डिबेंचर्स और यू कैन हैव अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. द सेकंड कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर. अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर द डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल डिबेंचर्स and irredeemable debentures. To redeem matlab to repay. If the company has issued redeemable debentures, then the company will be repaying the debenture holders their amount at the end of specific time period. Say suppose 10 years, 15 years, 5 years, whatever. Once that specific time period is over, company उन debentures को redeem कर देगी. And if the company has issued irredeemable debentures, then these debentures amount will be redeemed by the company at the time of winding up. जब कंपनी शट डाउन होगी तब इन डिबेंचर होल्डर्स को अपना अमाउंट वापस मिलेगा. सो बेस्ड ऑन टेन्योर, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, अगेन डिबेंचर कैन बी रिडीमेबल और इट कैन बी irredeemable. Then the third category of debentures is on the basis of mode बोलो या on the basis of conversion. The debenture can be convertible debenture or the debenture can be non-convertible debenture. If the company has issued convertible debenture, then company few years के बाद debenture holders को option देगी, आपको आपके debentures को shares में convert करना है. Now it depends on debenture holders. They can opt that option. हाँ हमें हमारे debentures को shares में convert करना है. They can reject that option. नहीं हमारे debentures को debentures ही रहने दो, share में convert नहीं करना. They can partly opt that option also कि fine मैंने आपसे 100 debentures लिए थे, एक काम करो 60 को debentures ही रहने दो, बाकी 40 को आप shares में convert करो. बट एटलीस्ट कंपनी आपको कन्वर्जन का ऑप्शन देगी. एंड इफ इट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए थे, आजीवन वो डिबेंचर्स ही रहेंगे. कंपनी आपको कभी भी ऑप्शन नहीं देगी कि आपके डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है क्या. अगेन अंडर कन्वर्टेबल कैटेगरी ऑल्सो द कंपनी कैन हैव पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल मतलब शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा.
इफ इट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपनी आपको ऑप्शन देगी आपके 50% डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने का चांस हम दे रहे हैं, करना है क्या? Now it depends again on you. You can opt that option, you can reject that option, you can partly opt that option as well. And if the company has issued fully convertible debentures, कंपनी आपको ऑप्शन देगी आपके सारे के सारे डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करना है, अगर करना है तो वी विल अलाउ. अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर विश, you can opt, you can reject, or you can partly opt that option. So based on mode, the debentures can be convertible or it can be non-convertible debentures. Now the fourth category of debentures is on the basis of registration. Again on the basis of registration, the debentures can be registered debentures or the debentures can be unregistered debentures. If the company has issued registered debentures, then debenture holder की सारी details like the name and address and all, कंपनी अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगी. And if the company has issued unregistered debentures, then debenture holder की कोई भी डिटेल्स कंपनी अपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं करेगी. So on the basis of registration, again the debenture can be registered or it can be unregistered debenture. And the last and the fifth category is on the basis of coupon rate. Coupon rate matlab the rate of interest. Again, based on coupon rate, the debentures can be of two categories. It can be zero coupon debentures or it can be specific coupon debentures. Now, generally the debentures, if they are specific coupon debentures, company जब भी कभी debenture issue करेगी, company बोलेगी, we have issued 9% debentures, we have issued 12% debentures. So this 9%, 12% is the interest rate. Irrespective of profit or loss, company आपको every year 9%, 12% या whatever interest rate is specified, आपको उस रेट पे इंटरेस्ट देगी ही देगी. But if the company has issued zero coupon debentures, then company's debenture won't carry any such interest rate. तो फिर आप इन्वेस्ट क्यों करोगे अगर कंपनी आपको 0% इंटरेस्ट देती है? आपको क्या फायदा? बट यहाँ पे भी कंपनी आपको फायदा करवाएगी. व्हाट द कंपनी विल डू? कंपनी विल इश्यू डिबेंचर एट डिस्काउंट. सपोज 100 रुपीज का वन डिबेंचर है, कंपनी विल गिव दैट डिबेंचर टू यू एट 95. दैट इज कंपनी ने आपको डिस्काउंट पे डिबेंचर इश्यू किया. जब 5 years 10 years का टेन्योर खत्म होगा, at that time company will redeem that debenture at premium. Suppose 100 रुपीज का डिबेंचर था, 5 years 10 years का जब भी टेन्योर खत्म होता है, 100 के बदले में कंपनी से सपोज आपको 107 देगी. दैट इज रिडम्पशन विल टेक प्लेस एट प्रीमियम. तो जब इश्यू हुआ, डिस्काउंट से इश्यू हुआ, आपको 5 रुपीज का फायदा हुआ. 100 का माल 95 में मिला, 5 का गेन हुआ. एंड जब रिडम्पशन हुआ 100 दिया था बट उसके बदले में मिला कितना आपको? 107 मिला. सो अगेन यू हैड अ बेनिफिट ऑफ 7 ओवर हेयर एज वेल. सो टोटल आपको कंपनी से 100 रुपीज के डिबेंचर में 12 रुपीज का बेनिफिट हुआ. दैट इज आपको 12% का बेनिफिट हुआ. And like this, the company will issue zero coupon debentures जो कोई specific rate carry नहीं करेंगे. But these debentures will be issued at discount and they will be redeemed at premium. I hope all the 5 categories and all 10 subcategories of debentures are clear to you. Now, like debentures, the company can collect funds from shares as well. So as such अगर हम देखें तो shares और debentures both are the sources जिसके थ्रू कंपनी मार्केट से फंड्स कलेक्ट कर सकती है. बट दोनों में सिमिलरिटी खाली एक है कि both are the sources of finance, but they have so many points of difference between them. So let's discuss the difference between shares and debentures. Now if we talk ownership के basis पे, then shares are a source of owners funds, whereas debentures are the source of borrowed funds. Now based on capital or loan,
The funds collected by shares are termed as capital of the company, but the funds collected by debentures are known as loan because the company has borrowed them. Now if we talk of the return, अगर आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न में जो मिलेगा दैट इज डिविडेंड, बट अगर आप कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न में जो मिलेगा दैट इज इंटरेस्ट. नाउ इफ वी टॉक ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न, the rate of return on shares will be higher in comparison to the rate of return on debentures, and vice versa, the rate of return on debentures will be lower compared to the rate of return on shares. Now if we talk of compulsion, it is not compulsory to pay dividend on shares, but it is always compulsory to pay interest on debentures. Now if we talk of what the holders are known as, the shareholders are known as owners of the company, whereas debenture holders are known as creditors of the company. Now if we talk about voting rights to them, then shareholders do get voting right, but the debenture holders do not get voting right. Because they have voting right, the next point is participation in management. Because shareholders are owners, they of course do participate in management. Because debenture holders are not the owners, they do not get right to participate in management. If we talk of conversion, then shares can not be converted into debentures, but debentures do get converted into shares. And the last one, issue. How you can issue shares? You can issue shares at par. 10 का शेयर 10 में issue करो. You can issue them at प्रीमियम एज वेल. 10 का शेयर 12 रुपीज में इश्यू करो, बट यू कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट. जबकि अगर हम डिबेंचर की बात करें तो आप डिबेंचर को एट पार भी इश्यू कर सकते हो, डिबेंचर एट प्रीमियम भी इश्यू हो सकता है, एंड डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट discount as well. So based on these many points, you can differentiate between shares and debentures. Generally, because accounts is a practical subject, students theory portion को बहुत lightly लेते हैं, but theory is also equally important. अगर theory आएगी तो sums में भी आपको help out होगा. Plus these type of theory things can help you solve MCQ as well. So do study them well. From the next session onwards, we will be covering all the practical sums one by one. So until the next session, stay tuned and goodbye.